हेलो माय सीए फाउंडेशन फ्रेंड्स। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे बुक कीपिंग क्या है, ठीक है, एंड मैनी मोर थिंग्स। अगर टाइम परमिट्स ज़्यादा कवर करेंगे आज, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। So, bookkeeping is an activity concerned with recording of financial data relating to business operations in a significant and orderly manner. Previous lecture में हमने देखा था कि one of the objective of business is to record the transactions. वो recording of transaction is called bookkeeping only, ठीक है। जो भी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स है वही सिर्फ हम अकाउंटिंग या बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इट कवर्स प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग वर्क एंड एम्ब्रेसेस रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन. Obviously, bookkeeping procedures are governed by the end product, the financial statement. Bookkeeping का purpose ही क्या है? Financial statement prepare करना. So, end result or end product is the financial statement. On that basis, we make analysis. The term financial statements means profit and loss account, balance sheet, and cash flow statement, including schedules and notes forming part of financial statements. As you know, three important financial statements are: one is profit and loss account, through which we get to know the profit and loss of the business, and another one is balance sheet, through which we get to know the financial position of the business like assets and liabilities, equities, and third one is cash flow statement, through which we get to know cash outflows and inflows into the business. Okay, and it also includes some schedules and notes forming part of the accounts. Bookkeeping also requires suitable classification of transactions and events. This is also determined with reference to the requirement of financial statements. A bookkeeper may be responsible for keeping all the records of the business or only of a minor segment, such as position of the customer's account in a departmental store. Accounting is based on a careful and efficient bookkeeping system. The essential idea behind maintaining bookkeeping record is to show correct position regarding each head of income and expenditure. ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्या पोजीशन है बिजनेस में? फॉर एग्जांपल, इनकम कहाँ से आ रहा है, रेवेन्यू सोर्स क्या है, एंड एक्सपेंस तो विच टाइप ऑफ एक्सपेंस वी आर इनकरिंग, सैलरी हो गया, प्रोफेशनल फीस हो गया, और परचेस कर रहे हैं सब मटेरियल्स, या कुछ माइनर एक्सपेंसेस है, या फॉर एग्जांपल बिजनेसेस में कुछ एम्प्लॉय रिलेटेड रीइंबर्समेंट्स है। जो भी कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंडिचर है या एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंसेस है, वेजेस है, जो भी कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंडिचर है वो, एंड इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, ये सब कुछ प्रॉपरली मेंटेन करना बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है. A business may purchase goods on credit as well as in cash. When the goods are brought on credit, a record must be kept of the person to whom money is owed. Okay, the proprietor of the business may like to know from time to time what amount is due on credit purchase and to whom. ठीक है, अगर बिजनेस गुड्स हम परचेस कर रहे हैं बिजनेस में ऑन क्रेडिट बेसिस विदाउट पेइंग कैश इमिडिएटली, इन दैट केस एक रिकॉर्ड रखना चाहिए कि किससे हमने मटेरियल लिया, अमाउंट क्या था, कितने क्वांटिटीज थे, एंड हाउ मच वी आर लाइक लायबल टू पे टू दैट वेंडर, एंड क्रेडिट पीरियड क्या है, और वेंडर ने कब तक हमें पैसे देने के लिए बोला है, मतलब ड्यू डेट क्या है. All these kinds of information an accountant must keep because business owner wants to know how much quantity of goods we have purchased at what price and what is the credit period, and when we are like when we have to pay the amount, what is the due date, and all these kinds of information a business owner or a proprietor wants to know. If proper record is not maintained, it is not possible to get details of transactions in regard to the income and expenditure. धोखा होने की भी चांसेस है इसमें. ओके, अगर प्रॉपर रिकॉर्ड हम मेंटेन ही नहीं करते तो कहाँ से इनकम आ रहा है या कहाँ पे पैसा जा रहा है. एक सिंपल, इट्स अ सिंपल मैथमेटिक्स और इट्स अ सिंपल फिनेंशियल ट्रांजेक्शन. अगर आपके घर में भी आपके पापा पैसे कमा रहे हैं, आपके पापा की सैलरी आ रही है, तो मम्मा क्या करती है कि सैलरी में से थोड़ा बहुत अमाउंट ग्रोसरी के लिए निकाल के रखते हैं, सैलरी में से थोड़ा बहुत अमाउंट रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कुछ नोट भी करते हैं, ठीक है. अगर अभी आपको पता ही नहीं है कि पापा की सैलरी कितनी आ रही है, और सैलरी तो पता है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पैसा जा रहा है अगर आपको पता ही नहीं है, तो इट्स लाइक कि आप पैसे तो कमा रहे हो बट कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है ये आपको पता ही नहीं है. इससे क्या होगा कि
यू कैन नॉट कंट्रोल ऑन योर एक्सपेंस। अगर ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है मंथ एंड के वक्त आपके पास पैसे ही नहीं बच रहा है, तो यू शुड नो कि हम फालतू का कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं क्या, या कहाँ पे हमारा इतना पैसा जा रहा है। ऑल दीज वी नो ओनली बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है या कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं, ये सब हम नोट करेंगे ना, तो ये सब इजी हो जाएगा फॉर एनालिसिस एंड कॉस्ट सेविंग पर्पसेस। In that case, accounting is the important technique, or accounting is the important method through which we can control the cost, or we get to know the position of our income and expenditure. At the end of the accounting period, the proprietor wants to know how much profit has been earned or loss has been incurred during the course of the period. For this, lot of information is needed, which can be gathered from a proper record of the transaction. Therefore, in bookkeeping, the proper maintenance of books of accounts is indispensable for any business. At this level, the major concern of the curriculum is with bookkeeping and preparation of financial statement. It seems important to mention at this point that bookkeeping and preparation of financial statements have legal implications too. Maintenance of books of accounts and the preparation of financial statements of company are guided by the Companies Act. Banks and insurance companies by special acts governing these institutions and so on. However, for sole proprietorship and partnership business, there is no specific legislation regarding maintenance of books of accounts and preparation of financial statements. Okay, preparation of books of accounts also has a legal implication. मतलब कंपनीज अगर है तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना रहता है। लाइक शेड्यूल 3 पर्टिकुलर एक फॉर्मेट है, प्रॉफिट एंड लॉस कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, बैलेंस शीट कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, अकाउंटिंग पॉलिसीज है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सब कंपनीज एक्ट 2013 या कंपनीज एक्ट वट एवर provides those policies or those rules to maintain the books of accounts. और ये सिर्फ कंपनी का हो गया, बैंक्स के लिए सेपरेट है एंड इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी सेपरेट है, ठीक है। नाउ कमिंग टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग: complete recording of transactions, ascertainment of financial effect on the business. Complete recording of transactions means it is concerned with complete and permanent record of all transactions in a systematic and logical manner to show its financial effect on the business. And second one is ascertainment of financial effect on the business. It is concerned with the combined effect of all the transactions made during the accounting period upon the financial position of the business as a whole. ये in a nutshell it is प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन एंड जो भी फिनेंशियल रिजल्ट आता है उसका एनालिसिस करना. दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग. नाउ कमिंग टू डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग में क्या डिफरेंस है और क्या वेरियंस है वो देखते हैं. Some people mistake bookkeeping and accounting to be synonymous term, but in fact they are different from each other. Accounting is a broad subject. It calls for a greater understanding of records obtained from bookkeeping and an ability to analyze and interpret the information provided by bookkeeping records. Bookkeeping is the recording phase, while accounting is concerned with the summarizing phase of accounting system. Bookkeeping provides necessary data for accounting, and accounting starts where bookkeeping ends. Okay, इन अ नटशेल बुक कीपिंग ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एंड अकाउंटिंग इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट. ओके, जहाँ पे बुक कीपिंग एंड होता है वहाँ पे अकाउंटिंग स्टार्ट होता है. मतलब बुक कीपिंग इज सिंपली अ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अकाउंटिंग इज होल थिंग, मतलब रिकॉर्डिंग करते वक्त क्या क्या पॉलिसी लगने वाला है और कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वी आर यूजिंग और व्हाट अकाउंटिंग मेथड्स वी आर फॉलोइंग, and analysis of the financial statements, variance analysis, forecasting, budgeting, all these kinds of activities included in accounting, but good keeping is only concerned with recording of the transactions. यहाँ पे देखेंगे आगे हम एक डिफरेंस क्या है. फर्स्ट वन इज बुक कीपिंग का. इट इज़ अ प्रोसेस कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन. अकाउंटिंग का इट इज़ अ प्रोसेस कंसर्न विथ समराइजिंग ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस. ओके, सिर्फ रिकॉर्ड करना इज बुक कीपिंग एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन एक फॉर्मेट में समराइज करके उसको एनालिसिस करना इज द अकाउंटिंग. Bookkeeping constitutes as a base for accounting. Accounting is considered as a language for business.
Financial statements do not form part of this process. Financial statements are prepared in this process on the basis of bookkeeping records. Okay, bookkeeping is just a recording of transactions. समराइजिंग यहाँ पे फिनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट आता है अकाउंटिंग में. आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर करते हैं आफ्टर समराइजिंग द ट्रांजेक्शन्स वो पार्ट कम्स अंडर अकाउंटिंग. ठीक है. Managerial decisions cannot be taken with the help of these records. Management takes decisions on the basis of these records because यहाँ पे पूरा का पूरा financial position management को दिखता है. Recording में management को पूरा का पूरा financial position नहीं दिखता क्योंकि financial statements हमने यहाँ पे prepare ही नहीं किया है. ठीक है. There is no subfield of bookkeeping. It has several subfields like financial accounting, management accounting, cost accounting, etc., etc., etc. department wise. ठीक है. Financial position of the business cannot be ascertained through bookkeeping records. Financial position of the business is ascertained on the basis of accounting reports. Relationship of accounting and bookkeeping can be depicted in the following chart. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हो कि accountancy is a broader concept. Under accountancy we have accounting. Accounting के अंदर आता है bookkeeping. So bookkeeping एक छोटा सा part है and accounting is the broader concept. Now coming to subfields of accounting. What are the subfields of accounting? The various subfields of accounting are financial accounting, management accounting, cost accounting, social responsibility accounting and human resource accounting. These are accounting ही एक मेन हेड है. उसमें कैटेगरीज भी है कि डिपार्टमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिवाइड किया है अकाउंटिंग को. वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अनदर वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अनदर वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. वन बाय वन देखते हैं. What is financial accounting? It covers the preparation and interpretation of financial statements and communication to the users of accounts. It is historical in nature as it records transactions which had already been occurred. The final step of financial accounting is preparation of profit and loss account, balance sheet and cash flow statement. It primarily helps in determination of the net result of for an accounting period and the financial position as on the given date. ठीक है. ये सब तो आपको पता ही है, पहले लेक्चर से हम ये सब कुछ सुन रहे हैं. ठीक है. आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट कमिंग टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग. It is concerned with internal reporting to the managers of a business unit. To discharge the functions of stewardship, planning, control, and decision making, the management needs variety of information. The different ways of grouping information and preparing reports as desired by managers for discharging their functions are referred to as management accounting. A very important component of management accounting is cost accounting, which deals with the cost ascertainment and cost control. Management accounting will be dealt with a higher level of the chartered accountancy course. ठीक है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये है कि यहाँ पे कुछ MIS रिपोर्ट्स हम प्रिपेयर करते हैं. MIS मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. ठीक है. ये रिपोर्ट क्या होता है कि पर्टिकुलरली मैनेजमेंट को जो चीज़ देखना है ना उसको कस्टमाइज करके एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है. उसको हम मैनेजमेंट रिपोर्ट्स या मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं. फॉर एग्जांपल बिजनेस में अगर हम एक ट्रैवलिंग मतलब एम्प्लॉयज़ को कैब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है. तो मैनेजमेंट वांट्स टू नो हाउ मच एम्प्लॉयज़ आर अवेलिंग कैब सर्विसेज एंड हाउ मच एम्प्लॉयज़ एक्चुअली बुक द कैब एंड हाउ मच एम्प्लॉयज़ cancelled the cab and how much employees actually traveled. ठीक है. ऑल दिस इंफॉर्मेशन अगर मैनेजमेंट को चाहिए तो वी प्रिपेयर वन रिपोर्ट जहाँ पे हम ये मेंशन करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ट्रैवलर्स कितने थे, नंबर ऑफ बुक्स कितने हो गए या नो शो कितने हो गए. नो शो मतलब कैब बुक किया बट ट्रैवल नहीं किया या कैब बुक करके कैंसिल किए. ये सब कॉस्ट कितना जा रहा है कंपनी का, ये सब मैनेजमेंट वांट्स टू नो. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ अ रिपोर्ट. सो मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग के हिसाब से या मैनेजमेंट क्या देखना चाहते हैं उसके हिसाब से जो रिपोर्ट हम प्रिपेयर करते हैं उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं. ठीक है. नाउ कमिंग टू कॉस्ट अकाउंटिंग. The terminology of cost accounting published by Institute of Cost and Management Accountants of England defines cost accounting as the process of accounting for cost which begins with the recording of income and expenditure or the basis on which they are calculated and ends with the preparation of periodical statements and reports for ascertaining and controlling the cost.
कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब प्रॉपरली कॉस्ट का कैलकुलेशन करना, प्रोडक्ट कॉस्ट कितना है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ओवरहेड्स कितने हैं, सेलिंग ओवरहेड्स कितने हैं, ये सब कुछ, कॉस्ट पर प्रोडक्ट कितना है, ठीक है। ये सब एक कॉस्ट अकाउंट, स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग का रिपोर्ट या कॉस्ट कहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब देखने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग इज द मेन थिंग विच बिजनेसेस यूज। Social responsibility accounting. The demand for social responsibility accounting stems from increasing social awareness about the undesirable byproducts of economic activities. As already discussed earlier, social responsibility accounting is concerned with accounting for social cost incurred by the enterprise and social benefit created. Social responsibility accounting मतलब corporate social responsibility करने के लिए एक cost prepare like cost का analysis करना, या सोसाइटी के लिए सोसाइटल बेनिफिशियल के लिए एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना, ऑल दिस कम्स अंडर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. Now coming to human resource accounting. Human resource accounting is an attempt to identify, quantify and report investments made in human resources of an organization that are not presently accounted for under conventional accounting practice. ह्यूमन रिसोर्स के लिए मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए, एम्प्लॉयज़ हायर करने के लिए, रीहायर करने के लिए या एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग के लिए जो भी कॉस्ट होता है या जो भी हम कंसिडर करते हैं कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, वो सब रिकॉर्ड करना, इट इज़ ह्यूमन रिसोर्स, इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ठीक है. नाउ कमिंग टू यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, दिस इज यू ऑलरेडी नो कौन कौन स्टेक होल्डर्स है, बट फिर भी हम एक समरी फॉर्म में देखते हैं, ठीक है. आई एम सो सॉरी. Generally, users of accounts are classified into two categories. One is internal users and another one is external users. Management accounting is concerned with identifying information requirements as well as methods of providing such information to management, while information requirements of outside users are generally served by financial statements. Following are the various users of accounting information. एक एक देखते हैं. Investors. They provide risk capital to the business. मतलब investors capital invest करते हैं business में. They need information to assess whether to buy, hold, or sell their investment. Also, they are interested to know the ability of the business to survive, prosper, and to pay dividend. In non-corporate sector, where the ownership and management are not essentially separated, the owners still need information about the performance of the business and its financial position to decide whether to continue or shut down. So investors, why investors need financial information of the business? अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्टर्स बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दे वांट टू नो वेदर देयर मनी इज सेफ और नॉट, वेदर दे आर गेटिंग प्रॉफिट और नॉट. फॉर दिस दे यूज फिनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, अगर वो डिसीजन लेना चाहते हैं होल्ड करें या इस बिजनेस को बेचें या यहाँ से इन्वेस्टमेंट हम निकालें, ये सब डिसीजन लेने के लिए फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्प करते हैं इन्वेस्टर्स को, ठीक है. And next, coming to employees. Growth of the employees is directly related to the growth of the organization, and therefore they are interested to know the stability, continuity, and growth of the enterprise and its ability to provide remuneration, retirement, and other benefits, and to enhance employment opportunities. Employees are also interested in the financial position of the business because they want job security. They want to know how their business is performing in the market. Is business going to shut down or is business is growing, और अगर बिजनेस ग्रो कर रहा है तो कितना ग्रो कर रहा है, और उससे हम एम्प्लॉयज़ के लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा, रेम्यूनरेशन, इन टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन, इज बिजनेस इज एबल टू प्रोवाइड द रेम्यूनरेशन टू द एम्प्लॉयज़ और अदर बेनिफिट्स, रिटायरमेंट का बेनिफिट या परफॉर्मेंस बोनस, ये सब कुछ. Performance bonuses also depends on the profits of the business. For this, employee want to know the financial position of the business. So they are the internal stakeholders of the business. Lenders. They are also interested to know whether their loan principal and interest will be paid back when due. This whether business is in a position to pay back their loan. So this information is known by loan providers or lenders on the basis of financial statements. Suppliers and creditors. They are also interested to know the ability of the enterprise to pay their dues. That helps them to decide the credit policy for the relevant concern, rates to be charged, and so on. Sometimes they also become interested in long term continuation of the enterprise if their existence becomes dependent on the survival of that business.
Customers are also concerned with the stability and profitability of the enterprise because their functioning is more or less dependent on the supply of goods. Suppose a company produces some chemicals used by pharmaceutical companies and supplies chemicals on 3 months credit. If all of a sudden it faces some troubles and is unable to supply the chemical, the customer will also be in trouble. Okay, for this reason, customers also want to know the financial statement because if they are dependent on our business and if the business is not performing well, then they are also in trouble. So for that purpose, customers are also want to know the financial position of the business. Government and their agencies, they regulate the functioning of the business enterprise for public good, allocate scarce resources among the competing enterprises, control prices, charge excise duties and taxes, and so they have continued interest in the business enterprise mainly because of the tax and regulations. Duties collect करने के लिए business का financial position देखने के लिए government is like it is the external stakeholder for the financial statements of the entity. The public at large is interested in the functioning of the enterprise because it may make a substantial contribution to the local economy in many ways, including the number of people employed and their patronage to local suppliers. Management as whole is also interested in the accounts for various managerial decisions. On the basis of the accounts, management determines the effects of their various decisions on the functioning of the organization. This helps them to make फर्दर मैनेजरियल डिसीजंस. ठीक है, मतलब कॉस्ट रिड्यूस करना, इंक्रीज करना, कहाँ पे हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, मैनेजमेंट का डिसीजन यही रहता है. ठीक है, फॉर दिस पर्पस मैनेजमेंट इज द इंटरनल स्टेक होल्डर टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, यहाँ पे कौन कौन इंटरनल एंड एक्सटर्नल है वो डिसाइड करते हैं. इन्वेस्टर्स आर द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉयज इंटरनल, all these like lenders, suppliers, customers, government, public, all are the external stakeholders. Management employees, owners, these are the internal stakeholders. Okay. In next videos we'll see next topics. Till then stay tuned, subscribe to my channel, support, and अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिएगा एंड जिसको ज़रूरत है उसके साथ शेयर कीजिएगा. ओके, टिल देन स्टे ट्यून्ड, टाटा.